Assalamu alaikum students. कैसे हैं आप? I'm your instructor Muzaffar Saeed and today we are going to discuss once again critical thinking. Critical thinking is a quite vast topic. That is why we are using this second lecture to comprehend a different type of questions for critical thinking. So let's go to the lightboard and start our lecture. Ladies students, we are at the lightboard and as I have just told you in the intro, today we are further discussing critical thinking. In the last lecture, we discussed certain scenarios regarding critical thinking. इस लेक्चर में हम उन सिनारियोज को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे द प्रीवियस ones जो हमने देख चुके बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग critical thinking. One type of questions we have already discussed in the last lecture and we are continuing with it in this lecture, and later in this lecture we will discuss the second type of questions as well. So be very attentive और इसको देख लीजिएगा क्योंकि दूसरी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इस वाली टाइप से बहुत डिफरेंट होते हैं. सो लेट्स सी कि सिनेरियो हमारे पास क्या है जी. सम पीपल थिंक दैट prospective employers should include a photograph with their application form. Such practice has been traditionally criticized for allowing more attractive individuals to go ahead or to get ahead in their careers over plain colleagues. Now, plain colleagues हम उनको कह रहे हैं यहाँ पर जो बड़ी कबूल सूरत हैं या मतलब एवरेज लुक्स के साथ हैं. They are basically referred to as plain colleagues. However, study proves that it is not true. अब क्या चीज़ ट्रू नहीं है वो अभी आगे इसमें डिस्क्लोज करेंगे वो. This study is based on dumb blonde hypothesis that beautiful women are thought to be unwise. अब ये जो है स्टडी किस चीज़ को प्रूव कर रही है कि इट इज़ नॉट करेक्ट कि दिस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट करेक्ट. एक्चुअली वो ये नहीं कह रही कि ये आइडिया जो है वो इनकरेक्ट है. दिस स्टडी इज़ एक्चुअली प्रूविंग that this method of selecting candidates merely on their looks is not correct. ठीक है, और वो उसकी आगे फिर वो रीज़न भी दे रहा है कि ये क्यों ये ऐसा कह रहे हैं. बिकॉज दिस स्टडी is based on a hypothesis that beautiful women are thought to be unwise. This is called dumb blonde hypothesis. Ruffel, the creator of this study, submits that the companies would be better advised adopting the selection model used by Belgian public sector, where CVs are anonymous and candidate names, gender, and photographs are not allowed to be included on CVs. Such a model allows the candidate to be selected on factors relevant to the applied role. मतलब उनको looks की बेस पे कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए. So now let's come to the questions and see what scenarios do we have. The very first question is, the dumb blonde hypothesis states that beautiful women are unwise, and the options we have A, B, C, D and E. I have written these options for you. देख रहे, A is for true, B is for probably true, C is for insufficient data, D is for probably false and E is for false. Just like the last lecture, we are following the same pattern actually. So we have already been told clearly that this dumb blonde hypothesis states that beautiful women are thought to be unwise. So it is evident, और यही बात वो यहाँ पे कह रहे कि dumb blonde hypothesis क्या कहता है? It states that beautiful women are unwise. So this statement is absolutely true. ठीक है.
इसके अलावा जो है हमारे पास और कोई ऑप्शन इसकी है ही नहीं, बिकॉज जो स्टेटमेंट थी वही स्टेटमेंट हमसे यहाँ पर पूछी गई है. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड वन. To reduce discrimination on the basis of appearance or gender. Here what we have been told that the Belgian public sector probably uses this method to reduce discrimination on the basis of appearance or gender. Here we cannot say absolutely true, but we can say that this segment or this statement I should say is probably true. Why it is probably true? Because we get an idea कि अगर वो ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेथड अडॉप्ट ही क्यों किया है बेल्जियन पब्लिक सेक्टर ने, एनोनिमस कैंडिडेट्स वाला और एनोनिमस कैंडिडेट्स नेम वाला. व्हाई? बिकॉज to discriminate the advantage or disadvantage one can face due to appearance, gender or any other factor that is not relevant to the applied rule. So yes, we can say कि ये statement क्या है? It is not perfectly true. कोई ऐसा clear cut statement तो नहीं उनकी हमें दी हुई, but we can conclude from that discussion that they are probably doing it because they want to reduce that discrimination. Now let's move on to some more scenarios regarding this particular statement. Let's move on to the next question ji. The method adopted by Belgian public sector has helped reduce the discrimination regarding gender or appearance. Again, we have the same 5 options. Now here we can see that we have not been told whether this method actually helped or not. ये तो हम कह सकते हैं because they were not interested or they banned posting a photograph or name or anything like that on the CVs. So we can say with confidence that they probably wanted to eliminate that discrimination based on appearance, gender or any other thing. But did they really achieve it? क्या उन्होंने वाकई उसको अचीव भी किया
या नहीं किया, वॉज दिस मेथड हेल्पफुल और नॉट, इसके बारे में कोई स्टैटिस्टिकल डेटा, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो हमें इस स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है. सो वी कैन सेफली से दैट we require more data in order to verify that statement, in order to accept or reject that statement. Because यहाँ पर तो उन्होंने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया ना कि भाई इस मेथड से एक्चुअली मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म भी हुई या नहीं हुई. We haven't been told. So that is why we cannot reject or accept that statement. The only thing we can say is that we have insufficient data to actually claim that this statement is true or false. So इससे आपको समझ आ जाएगा. सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं. अब इसके बाद the method employed by Belgian public sector has intensified regarding gender or appearance. Now this statement is probably false. Why? It is not completely false because we do not have any statistical data or any facts or figures or any definition on which we can say that this statement is absolutely false. This statement is absolutely false, but we can feel they were not encouraging gender, they were not encouraging them appearance. So we can say safely कि इस चीज़ से वो discrimination intensify तो नहीं हुई होगी. And that is why here the right option for us will be option delta, that this statement is probably false. ठीक है. सो ये इस तरह से आप एक evaluation कर सकते हो कि whether a statement is true or false. Now let's go to the second type of questions regarding critical thinking. मैंने आपको बताया था at the start of this lesson when we were about to start critical thinking, तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं. एक तो ये scenario based है, we have practiced it enough, and now we are moving towards the next scenario, the next type of questions कि वो हमसे किस तरह पूछे जाएंगे. So let's see वो क्या questions हैं. Students, now we are heading towards the second type of questions regarding critical thinking, and I've already told you that in this particular type होता क्या है कि two statements are given. These two statements are facts. ये दो स्टेटमेंट्स होती हैं, ये क्लियर कट फैक्ट्स होती हैं. और करना क्या होता है, on the basis of these two factual statements, you are asked
evaluate the third statement whether it is true, false, or whether it's true, false or uncertain. So ये एक तरह से डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि आपके पास तीन स्टेटमेंट्स होती हैं इंस्टेड ऑफ तीन ऑप्शंस होती हैं इंस्टेड ऑफ 4 और 5 ऑप्शंस. इससे पहले हम जितने भी देख रहे थे उसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या थी, ईदर वी हैड 4 ऑप्शंस और 5 ऑप्शंस. बट दिस type of question is different in a way that it only has 3 options for you, whether a statement can be true or false, or we can say that this third statement is uncertain. So start करते हैं पहले क्वेश्चन से. और वो क्वेश्चन क्या है जी, in the last year, Sarah has seen more dramas than Hera. That is your statement number 1. And your statement number 2 is Hera saw fewer dramas than Anna. And the third is Aram saw more dramas than Sarah. अब क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ये होगा, if the first 2 statements are facts, statement 3 is option alpha true, beta false, and Charlie uncertain. Now, how to solve these type of questions? Easiest thing you can do is to assign a particular numeric value. For example, here we said that Sarah has seen more dramas than Hera. So let's say we assume that Sarah has seen 20 dramas and it has seen more dramas than Hera. So Hera's drama can maximum be 19 because उससे कम देखने हैं 19. And then Aram saw, in the second statement we are saying Hera saw fewer dramas than Aram. क्या Hera ने क्या किया? Aram से कम dramas देखे. It means कि Aram, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके ड्रामास 20 से लेके अनलिमिटेड हो सकते हैं because we have not compared Hera's drama with Sarah.
वी आर कंपेयरिंग द ड्रामा सीन बाय हिरा विद द ड्रामा सीन बाय इरम। तो हिरा के कितने थे 19। अब हिरा ने इरम से कम देखे, इट मीन्स के इरम के मिनिमम भी क्या होंगे 20 होंगे, बिकॉज हिरा से तो उसको ऊपर जाना है ना, तो उसके मिनिमम क्या होंगे 20, और 20 से आगे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वी डू नॉट नो। ठीक है, सो ये क्या होगी, इट कैन बी uncertain. The third statement, Aram saw more dramas than Sarah. Be not necessary. हो सकता है कि इसने कितने देखे हो, इसने भी 20 देखे हो, ठीक है, तो सारा और इसके क्या हो बराबर हो। या ये भी हो सकता है कि सारा ने से 30 देखे हो। फॉर एग्जांपल एक और सिनेरियो भी बिल्ड कर देता हूँ, सारा ने 30 देखे हो और हिरा के कितने हो 19, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी ठीक होगी ना कि हिरा हैज़ सीन फ्यूअर ड्रामाज दैन सारा, तो ये स्टेटमेंट तो फिर भी ठीक होगी। और अब अगर इसको ये कह देते ये 29 ही रहता और ये क्या करती 25 ड्रामास देखती, तो ये वाली दूसरी स्टेटमेंट तो हमारी तब भी क्या होती ठीक हो जाती, बिकॉज हिरा हैज सीन फ्यूअर ड्रामास देन इरम। तो हिरा के 19 बन रहे थे और इसके कितने बन रहे थे 25 बन रहे थे, तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो जाती। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट क्या होती, थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती। ठीक है, हिरा सॉ मोर ड्रामास देन सारा, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब इरम जो है वो 25 के बजाय इट इज़ पॉसिबल कि उसने क्या देखे हों 35 ड्रामास देखे हों, क्योंकि फिर भी हिरा से तो उसके ड्रामा क्या होंगे ज़्यादा ही होंगे ना, जो उसने ड्रामा देखे हैं वो हिरा से क्या होंगे ज़्यादा ही होंगे, तो 35 भी तो ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो मैक्सिमम के तो कोई लिमिट इसमें दी नहीं हुई। सो इट कैन बी करेक्ट और इट कैन बी इनकरेक्ट, दैट इज़ व्हाई वी आर चूजिंग अनसर्टन। ठीक है, इस तरह से आपने इसको देख लेना है कि किस तरह से आप अनसर्टन की ऑप्शन कैसे चूज करेंगे। एक और एग्जांपल करते हैं, all roses in Ali's garden are red. All tulips in Ali garden are white. ठीक है, and the statement 3 is that is your statement 2 and that is obviously statement number 1. Statement 3 is all flowers in Ali's garden are either red or white, and the options are true, that is your option alpha, beta is false, and Charlie is uncertain. Now this option is also uncertain, Charlie. Why? Because the first two statements are only about tulips and roses. पहली दो स्टेटमेंट्स तो क्या है, सिर्फ ट्यूलिप और रोजेस के बारे में है ना। अब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि
अली के बाग में सिर्फ ट्यूलिप और रोजेस ही हैं, देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट फ्लावर्स, तो और भी तो हो सकते हैं ना। सो अगर तो ये लिखा होता ना कि स्टेटमेंट 1 होती, फॉर एग्जांपल मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता है कि अली हैज़ ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन हिज गार्डन and all the tulips are red and all the roses are red and all the tulips are white. अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट होती है ना कि all the flowers in Ali's garden are either red or white. तो यहाँ पर फिर हम उसको करेक्ट कंसिडर करते हैं, बिकॉज उस वक्त हम ये कह रहे होते कि देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन अलीज गार्डन, बट हियर वी हैवंट सेड दैट. वी हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड कि अली के बाग में जितने रोजेज हैं वो क्या हैं, रेड हैं, और ट्यूलिप्स क्या हैं, वाइट हैं, बट वी हैव नॉट कॉन्फाइंड दीज फ्लावर्स टू ओनली 2. 2 तक तो हमने उसको महदूद नहीं किया. देयर कैन बी सो मेनी अदर फ्लावर्स, हो सकता है उसने और बेशुमार फूल लगाए हों. सो हाउ कैन वी से दैट ऑल द फ्लावर्स इन अलीज गार्डन आर ईदर रेड और वाइट. सो ये हम नहीं कह सकते. हाँ, तो अगर एक क्वेश्चन फिर ये भी आ सकता है कि सर देन व्हाई आर वी नॉट गोइंग फॉर फॉल्स, फिर तो फॉल्स पे चले जाना चाहिए. तो भाई फॉल्स पे इसलिए नहीं जा रहे कि ये भी तो मुमकिन है ना, दैट इज़ इक्वली पॉसिबल कि उसने क्या किए हों, 2 ही फ्लावर्स लगाए हों. तो दोनों चीज़ें चूँकि पॉसिबल हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द ऑप्शन अनसर्टन. कि मतलब ये क्लियर नहीं है कि 2 ही हैं या नहीं है, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, a right option for this MCQ will be uncertain. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की. लेकिन स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी टाइप के. The statement 1 is all the rooms on floor 10 are carpeted. Secondly, all the carpets are green in color. And the third statement is all the rooms on floor 10 are carpeted with green color carpets. Now you'll have to identify whether the third statement is true or false. बड़ा क्लियर है कि फ्लोर 10 पर जो है वो क्या है, पहली चीज़ जो हमने देखनी है फ्लोर 10 पे that all rooms are carpeted. This is a fact. Now all the carpets are green in color. तो जितने भी carpets हैं वो क्या हैं, वो हैं ही सिर्फ green color में. It means कि जो रूम 10 पे जो carpets मौजूद हैं वो भी क्या होंगे, they will also be green. क्योंकि सारे के सारे carpets क्या हैं, they are all green in color. So जब हमारे पास ऑप्शन आएगी true, false and Charlie uncertain, will surely go for alpha, because
जब हम कह रहे हैं कि सारे कारपेट्स हैं ही ग्रीन कलर के, तो फिर जो 10th फ्लोर पे कारपेट्स होंगे वो भी क्या होंगे, 10th फ्लोर पे जो रूम्स होंगे वो भी क्या होंगे, ग्रीन कलर के कारपेट से ही कारपेट किए गए होंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश अ फैक्ट यूजिंग योर सिंपल लॉजिकल रीजनिंग. और एक क्वेश्चन करते हैं इसी हवाले से. क्वेश्चन 2 देखते हैं जी हम. Enrollment in Ahmed's class is higher than enrollment in Babar's class. Beta enrollment in Babar's class is higher than that of Saud's class. In Charlie, enrollment in Saud's class is the lowest. अब 3 चीज़ें आ गई कि 3 लोगों की एनरोलमेंट की बात हो रही है, 3 लोगों की क्लासेस की. सपोज कर लेते हैं हम अहमद के क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. वी आर जस्ट सपोजिंग से इट इज़ 50. ठीक है. और वो कह रहे हैं कि उसकी क्लास में बाबर की क्लास से ज़्यादा लोग हैं. तो इट मीन्स कि बाबर की क्लास में अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी होंगे तो दे मस्ट बी 49, नॉट बियॉन्ड 49, बिकॉज 49 से आगे जाएंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर वो स्टेटमेंट ही हमारी गलत हो जाएगी. सेकेंड, वो कहते हैं कि एनरोलमेंट इन बाबर्स क्लास इज हायर देन दैट ऑफ सऊद्स क्लास. तो सऊद की क्लास में कितने होने चाहिए, दे कैन मैक्सिमम बी 48. ठीक है, 48 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना. थर्ड, वो कह रहा है कि एनरोलमेंट इन सऊद्स क्लास इज द लोएस्ट. तो ये क्या होगा, ट्रू, false or uncertain. We can surely tell that this statement is absolutely true. वजह उसकी क्या है, क्योंकि ये इससे ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो जाएगी. इस स्टेटमेंट को जब हम न्यूमेरिक फिगर्स में देखेंगे तो इट कैन ओनली गिव अस वन ऑप्शन एंड दैट इज ट्रू. सो इस तरह से आपने इन चीज़ों को लॉजिकली न्यूमेरिक वैल्यूज़ देके देख लेना है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम अभी कंटिन्यू करेंगे, आपने परेशान नहीं होना. थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं जी. मैंगोज कॉस्ट more than apple. That is the first thing. Second, grapes cost more than
apples, and the third statement is grapes are most expensive to buy. अब ये अपेरेंटली आपको लगेगा कि ये बिल्कुल पहले जैसे सवालों की तरह है, बट ये वैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम मैंगोज़ की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 200 पर केजी, एज्यूम कर रहे हैं, और दूसरा हमने क्या कहा, दे कॉस्ट मोर देन एप्पल्स. तो ये क्या है, इट कैन बी लाइक 190 kg, एज्यूम कर रहे हैं हम. ठीक है. नाउ ग्रेप्स कॉस्ट मोर देन एप्पल्स. अब ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या हो सकती है, 190 प्लस होनी चाहिए. अब ये 195 भी हो सकती है, और ये 205 भी हो सकती है, ये 300 भी हो सकती है, and it can go to any extent. ठीक है. So you can clearly tell that here, if we are given an option that whether this statement is true, false, or uncertain, you can clearly tell that it is uncertain. बिकॉज हो सकता है कि वो मोस्ट एक्सपेंसिव ना हो. अगर उसकी प्राइस हम रख लें 199, तो फिर वो मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं होंगे, बिकॉज देन द ग्रेप्स विल बी चीपर देन मैंगोज. और अगर हम उसकी प्राइस रख दें 205 या 300, तो देन दे विल बिकम मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्रूट. सो यहाँ दोनों ही चूँकि ऑप्शंस पॉसिबल हैं, इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली, दैट इज अनसर्टन. सो इस तरह आपने डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज देके सपोजिशन के थ्रू इन चीज़ों को एवेल्युएट करना है कि ये करेक्ट हैं या इनकरेक्ट है. सो आए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट होता है, मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स आप लोग इसकी डिफरेंट सिनेरियोज की देख सकें. सो लेट्स मूव ऑन टू अदर एग्जांपल्स. नहीं मेरे बच्चों, कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं इसी हवाले से. स्टेटमेंट 1 इज इमरान weighs more than Hashim. Number 2, Hashim weighs less than Hera. And the third statement is Hera has the least amount of weight. ठीक है. अब ये 3 स्टेटमेंट्स उसने हमें दे दी. नंबर 1 क्या है कि जी इमरान वेज मोर देन हाशिम, के इमरान का वेट जो है वो हाशिम से क्या है, ज़्यादा है. एंड देन हाशिम वेज लेस देन हरा, और हाशिम का वेट जो है वो हिरा से भी क्या है, कम है. सो हिरा हैज़ द लीस्ट वेट, हिरा हैज़ द लीस्ट अमाउंट ऑफ वेट कंसिडरिंग ऑल दीज 3. तो आप देखिए ऑप्शन अल्फा है ट्रू, beta as usual is false, and Charlie is uncertain.
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकली आप देखिएगा। से हम कहते हैं इमरान का वेट है 59 kg, एज्यूम कर रहे हैं हम, एंड ही वेज मोर देन हाशिम। हाशिम का वेट क्या होना चाहिए? वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज 55 kg, वैसे तो 58 तक भी जा सकते हैं, बट वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज 55 kg, and Hira has more weight than Hashim. ये थर्ड स्टेटमेंट में ये दे रहे हैं ना, तो हिरा का वेट क्या होना चाहिए? इट शुड बी एटलीस्ट मिनिमम 56, या अगर इसका 59 होता तो उसका क्या होता? 60, ठीक है। तो हिरा हैज द लीस्ट वेट। नो, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स। लीस्ट वेट तो उसका किसी भी सूरत में नहीं है, अनसर्टन नहीं हो सकता। दिस विल श्योरली बी फॉल्स, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि हाशिम का वेट क्या है? हिरा से कम है। तो दिस स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू। किसी भी हाल में, किसी भी तरह से आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू प्रूव नहीं होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट अनसर्टन, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली false. Let's take another example. The first statement is all the trees in Amna's garden are flowering trees. Second is some of the trees in Amna's garden are pines. And the third statement is all the pines are flowering trees. Option alpha is true, beta is false, and Charlie is uncertain. Now let's evaluate. वो कहते हैं all the trees in Amna's gardens are flowering trees, तो बिल्कुल सही है। Some of the trees in Amna's garden are pines, उसमें से कुछ दरख्त जो हैं वो क्या हैं? पाइन के हैं। Now all the pines are flowering trees. This is not true. Be very careful. याद रखें, ये ट्रू नहीं है। अपेरेंटली आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सारे के सारे ट्रीज जो हैं वो आमना के बाग में क्या है? फ्लावरिंग ट्रीज हैं। तो पाइन्स भी है, वो भी क्या है? वो भी आमना के बाग में लगे हुए हैं, तो पाइन भी क्या होंगे? वो फ्लावरिंग ट्रीज होंगे। बट यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं कि ऑल द पाइन्स आर फ्लावरिंग ट्रीज। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर तो वो ये कहता ना इन केस ऑल द पाइन्स इन आमना's garden, इन केस वो ये कहता तो फिर हम क्या करते? फिर हम इसको कहते ट्रू, बिकॉज ऑल द ट्रीज आर फ्लावरिंग ट्रीज, तो पाइन्स भी उन्हीं में हैं, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होंगे? ये भी फ्लावरिंग ट्रीज होंगे। बट यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आमना के बाग में जितने दरख्त हैं वो फ्लावरिंग ट्रीज हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो क्या हैं? पाइन्स के भी हैं। बट इट डज नॉट नेसेसरली मीन कि वो सारे के सारे क्या होंगे? मतलब उस बाग के बाहर भी जितने पाइन्स के दरख्त हैं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो भी सारे क्या हों? फ्लावरिंग ट्रीज हों। हो भी सकते हैं कि सीजन ऐसा चल रहा हो दे आर ऑल फ्लावरिंग, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी ना। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारे के सारे क्या हों?
flowering free zone. So our right option in this regard will be option Charlie, that is uncertain. आगे बढ़ते हैं. Apartments in mall X cost more than the apartments in mall Y. Secondly, apartments in mall Y costs more than the apartments in mall Z. ये second statement होगी. And the third statement is apartments in mall X are the most expensive. अब ये बिल्कुल वेरीफाई करते हैं इसको कि whether it is true, false or Charlie. Uncertain. देखते हैं. से मॉल एक्स की जो प्राइस है अपार्टमेंट की दैट इज 75 लाख. मॉल वाई की जो प्राइस है दैट इज 50 लाख. तभी उससे कम होंगे ना, अदरवाइज तो वो प्रॉब्लम ही अनरिजॉल्व रह जाएगी. मॉल एक्स के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस मॉल वाई के अपार्टमेंट से ज़्यादा है. सो इनकी हमने अज्यूम की 75 लाख और इनकी क्या की 50 लाख. सेकेंड में वो कहते हैं कि अपार्टमेंट्स इन मॉल वाई कॉस्ट मोर देन द अपार्टमेंट्स इन मॉल जी. तो अब मॉल जी के जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी प्राइस क्या होनी चाहिए, मॉल वाई के अपार्टमेंट से भी कम होनी चाहिए. तो दे मस्ट बी अराउंड 40 लाख या मतलब इवन 49 तक भी हो तो उससे तो कम ही होगी. तो 45 लाख या 40 लाख. तो यहाँ पर आपको क्लियरली लग रहा है, यू कैन क्लियरली डिड्यूस दैट दिस स्टेटमेंट इज द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज मॉल एक्स जो है उसके अपार्टमेंट्स जो है वो कंपैरेटिवली आपको मोस्ट एक्सपेंसिव लग रहे हैं. और ये वो स्टेटमेंट है जो हर हाल में ट्रू ही रहेगी, इसको किसी भी तरह से फॉल्स नहीं किया जा सकता. तो दिस इज हाउ यू कैन असाइन डिफरेंट वैल्यूज, यू कैन क्रिएट डिफरेंट अजम्पशंस टू वेरीफाई द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट. और क्रिटिकल थिंकिंग में रिमाइंड करवा दूं आपको, प्रॉब्लम ही बुनियादी तौर पे ये, उसमें यही आपने डिटर्मिन करना है कि हाउ टू सेपरेट फॉल्सहुड फ्रॉम ट्रुथ. यही काम है हमारा. आए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एंड लेट्स सी कि वो हमें कैसे हेल्प आउट करेंगी इन सेपरेटिंग ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड. ले मेरे बच्चों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस लास्ट चंक पे. हम स्टेटमेंट 1 इज Shan runs
faster than Imam. Beta, Imam runs faster than John. And Charlie, Sean is the quickest of all एथलीट्स। अब इस ट्रुथ को भी हम बिल्कुल उसी तरह वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शान की जो स्पीड है हमने एज्यूम की दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड शान रन्स फास्टर देन इमाम। सो इमाम की स्पीड क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी लेसर देन शान। तो मिनिमम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं इसको? दैट शुड बी 5 किलोमीटर पर आवर्स एंड देन इमाम रन्स फास्टर देन जॉन। तो जॉन की स्पीड इमाम से भी क्या होनी चाहिए? दैट हैज टू बी लेसर देन इमाम। तो इसमें आप देख रहे हो क्लियरली कि हाईएस्ट स्पीड जो है वो किसकी है? हु इज द फास्टेस्ट? दैट इज ऑब्वियसली शान। सो इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी क्या होगी? दैट विल बी ऑप्शन अल्फा, दैट शान इज श्योरली द क्विकेस्ट ऑफ ऑल एथलीट्स। सो इस तरह से आपने डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन करते हुए, डिफरेंट अजम्पशंस को इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर्स करने हैं। एक और क्वेश्चंस करते हैं। Temperature on Monday was lower than that on Sunday. कि मंडे को जो टेम्परेचर था दैट वाज लोअर देन द टेम्परेचर वी हैड ऑन संडे। And second statement is temperature on Tuesday was higher than the temperature we had on Monday. And the statement we need to verify is Sunday was the hottest of all 3 days. And the options are true, beta, false, and Charlie uncertain. Now assume the numeric values. Get the temperature on Monday was lower than that on Sunday.
सो अगर संडे को हमारा टेम्परेचर था 30 डिग्री, तो मंडे को क्या आना चाहिए था? इट मस्ट बी 25 और बाय द मैक्सिमम 29 डिग्रीज, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हम आगे नहीं जा सकते. एंड देन temperature on Tuesday was higher than the temperature we had on Monday. अब Tuesday को जो temperature था that was higher than Monday. अब दोनों possibilities हो सकती हैं. It can be like something between 26 to 29 degree. ये भी हो सकता है. And it can be like 31 degree to anything like say 50 degree. कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि उसने सिर्फ कंपेयर किया किसको? टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज बीइंग कंपेयर्ड विद मंडे ओनली. इट इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद संडे. संडे के साथ तो इसका कोई कंपैरिजन आ ही नहीं रहा. तो संडे से कम भी हो सकता है और संडे से ज़्यादा भी हो सकता है. सो वी कैन tell from these values that this statement that Sunday was the hottest day of all 3 days, ये statement क्या है? That is uncertain, because अगर Tuesday को temperature is between 26 and 29, तो फिर तो क्या होगा? Sunday will become the hottest day. फिर ये statement true हो जाएगी. But अगर 31 से ऊपर चला गया हुआ तो Monday से तो फिर भी higher ही है, तो फिर ये statement क्या हो जाएगी? It will stand false. इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि it is neither true nor false, rather it is an uncertain statement. So इस तरह से आपने चीज़ों को थोड़ा देख लेना. एक और क्वेश्चन करते हैं इसका. Statement 1 is Sarah is taller than James. Then James is shorter than David, and third, David is shorter than Sarah. And we have the options true, beta, false, and Charlie uncertain. Now assume करते हैं हम कि Sarah is taller than James. तो सारा की हाइट हम assume कर रहे हैं 6 feet. ठीक है. And then जेम्स की हाइट क्या होनी चाहिए? जेम्स इससे 6 से पहले वाली स्टेटमेंट को देखें तो सारा से क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी लेस देन सारा. एंड देन जेम्स इज शॉर्टर देन डेविड. जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, अब डेविड की हाइट क्या हो सकती है? इट कैन बी फ्रॉम 5.6 टू 5.9, ये भी हो सकती है. एंड इट कुड बी फ्रॉम 6 टू ऑनवर्ड, जितना मर्जी आप उसको एक्सटेंड कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज डेविड की हाइट जो है वो सारा से क्या है?
कंपेयर इसमें नहीं की जा रही। थर्ड स्टेटमेंट में हमने देखना है कि डेविड इज शॉर्टर देन सारा। नाउ दिस स्टेटमेंट you can see from these facts that this statement is uncertain. It can be possible, अगर तो ये वाली स्टेटमेंट हो उसकी, डेविड की हाइट ये हो, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, और अगर 6 से ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, फिर ये obviously statement will hold false. That is why we are saying that this statement is neither true nor false, rather it is uncertain. So I do hope कि इस सारे एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि दोनों टाइप्स के क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। लेंजी दैट इज इट फॉर टुडे। आई डू होप कि क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन जो है इट वुड हैव बीन क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। If not, if you have any question or any queries, do ask me. Use this comment box to the maximum and clear all the confusions you have. I'll be eagerly waiting to answer all your questions. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।